Good afternoon and welcome to UGC NET 24/7. I'm your guide for English Literature, Professor Aishwarya Puri. Welcome to my class. आज इस क्रैश कोर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं चौसर, जैसे मैंने आपको बताया था. कोशिश करूंगी एमसीक्यूज भी हम आज क्लास में साथ ही साथ कर ले. तो टाइम बिना वेस्ट किए लेट्स जस्ट डेल्व राइट इनटू इट. पहले तो थोड़ा आपको बेसिक मैं बता देना चाहती हूँ कैंटरबरी टेल्स के बारे में. कैंटरबरी टेल्स जिस पीरियड में लिखी गई थी उस पीरियड में बहुत सारे ऐसे सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे जिनकी वजह से कुछ कल्चरल चेंजेस आए, और उन कल्चरल चेंजेस की वजह से ही कैंटरबरी टेल्स जैसा एक वर्क लिखा गया. पहले तो मैं आपको बता दूं कैंटरबरी टेल्स का जो जॉनरा है, अगर हम इस वर्क को किसी जॉनरा में पुट करने की कोशिश करें तो ये एक एस्टेट सटायर माना जाता है. एस्टेट सटायर. सटायर क्या हुआ? एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर that seeks to criticize or criticize somebody or something. आप किसी के अंदर की कोई फॉली को, उनके किसी फेलियर को, किसी शॉर्टकमिंग को जब आप रिवील करने की कोशिश करते हैं थ्रू आप वो मेथड कुछ भी हो सकता है. आप डायरेक्टली उनकी उस जो भी शॉर्टकमिंग आप उसको रिवील करें, या फिर आप उसको मॉक करें, आप उसके ऊपर जो है आयरनी का इस्तेमाल करें. कोई भी ऐसा टेक्निक जब आप यूज करते हैं टू रिवील द शॉर्टकमिंग ऑफ फॉली ऑफ समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड अ सटायर. अब इस वर्क में जो डिफरेंट एस्टेट्स हैं, यानी जितने हमारे सोशल क्लासेस हैं, उनके ऊपर सटायराइजिंग देखी गई है. अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये जो वर्क है ये एक लेट 14th सेंचुरी वर्क है, ठीक है. 1380s टू 90s के बीच में जो है ये लिखा गया था. इस पीरियड में किंग की अथॉरिटी भी अभी तक चैलेंज नहीं हुई थी और ना ही चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया था. तो आई एम श्योर आपका सवाल कहीं ना कहीं मन में ये बनता होगा कि कैसे एक राइटर आते हैं और वो क्लर्जी को भी सेटायराइज कर रहे हैं, वो मोनार्की को भी सेटायराइज कर रहे हैं, वो नोबिलिटी को भी सेटायराइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे होंगे वो ये सब. तो मैं आपको बता दूं इस पीरियड में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिले थे जिसकी वजह से ये हो रहा था. एक तो 100 years वॉर फाइट किया जा रहा था, जिसकी वजह से ऑलरेडी पब्लिक में एक जनरल अनरेस्ट था, बिकॉज जो रॉयल ट्रेजरी है वो कम होती जा रही थी, इट वाज डिमिनिशिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल दे वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड or left without resources. The monarchy, the government, it was not able to support the common cause of the people, and that became a reason of utter unrest amongst people. Because of that, there were a lot of undue taxes, there were a lot of illegitimate taxes that were being taken. The money was taken from the common man and it was being used in wars. So also that led to a lot of unrest. And then last but not the least, बहुत important एक historical event है, that is the peasants revolt. The peasants revolt of 1381, ठीक है, led by Wat Tyler. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट बनता है जिसकी वजह से अब ये है कि मोनार्की को चैलेंज किया जा रहा था. साथ ही साथ दिस इज ऑल्सो द टाइम व्हेन रिफॉर्मेशन हैड और वाज अबाउट टू बिगिन in Germany, courtesy Martin Luther. And then, of course, there was John Wycliffe, who was almost about to write the first ever English translation of the Bible. So, church की authority को जो है वहाँ question किया जा रहा था. So, all these factors combined, now there was a change in the society that led to Chaucer writing a work like this. Of course, Chaucer was a courtier himself. He had fought in the 100 Years' War. So he held a special social status. He held a political status. So he was not a common man. He belonged to the upper strata of the society. So that was also one of the reasons why he remained untouched by any controversy. If there was any controversy around this work. Anyway, ये वर्क एक एस्टेट सटायर बन जाता है. इस वर्क के थ्रू जो है चौसर डिफरेंट जो एस्टेट्स हैं या जो डिफरेंट सोशल स्ट्रैटाज हैं उनको सेटायराइज करने की कोशिश करेंगे. एक सोशल क्लास जो इसमें नहीं दिखाई गई है वो है मोनार्की. याद रखिए. सो कोई किंग, कोई क्वीन, कोई प्रिंस, कोई प्रिंसेस कैरेक्टर आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको. लेकिन इसमें उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन नोबिलिटी देखने को मिलेगी. नोबिलिटी कैरेक्टर्स हैं, नोबलमैन कैरेक्टर्स हैं इसमें. वी हैव कैरेक्टर्स फ्रॉम द क्लर्जी वर द एक्लेसियास्ट ऑफ द चर्च, एंड देन वी हैड द कॉमनर्स. द कॉमनर्स ऑल्सो यू कैन डिवाइड देम इनटू टू क्लासेस. वन क्लास वॉज द एजुकेटेड क्लास, द अदर वॉज द इलिटरेट क्लास. सो ये सोशल क्लासेस, ये 3 सोशल क्लासेस इसमें दिखाई गई हैं. एंड हर सोशल क्लास से एक परफेक्ट कैरेक्टर, एक आइडियल कैरेक्टर दिखाया गया है. वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगी, ठीक है.
तो अब एक बार वर्क पे आ जाते हैं। अब मैंने नोट्स ये जो कंपाइल किए हैं ये अराउंड द फैक्ट किए हैं कि आपके क्वेश्चंस पास में कैसे बने हैं। बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई हैव कंपाइल्ड सम फैक्ट्स। ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन है बिकॉज ये लिमिटेड चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो मोर और लेस क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे एंड आप बहुत ईजिली इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो आज की क्लास को जो है आपने बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है सब लोगों ने। चलिए, सो इन टोटल वी हैड 29 पिलग्रिम्स who were on this pilgrimage, एक तीर्थ यात्रा पे थे towards the shrine of Saint Thomas Becket of Canterbury. So Canterbury Cathedral is considered to be the most important cathedral of England. I mean, whenever there is a royal event, say the ointment ceremony of a royal prince or a princess being born, or the accession to the throne of a king or a queen, any such important events that happen in the royal family of Britain, all the ceremonies are taken care of by the Archbishop of Canterbury. And Sir Thomas Becket was a very very important Archbishop of Canterbury, and he was in fact murdered. इसके ऊपर एक प्ले भी है हमारे पास सेपरेट T.S. Eliot का, कॉल्ड मर्डर इन दी कैथेड्रल, जिसमें से भी समरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज आप लोग एक ये भी काम कर लेना कि मर्डर इन द कैथेड्रल प्ले की समरी, कैरेक्टर्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो ये जितने 29 पिलग्रिम्स हैं ये मिलके इनकी थॉमस बेकेट की श्राइन पे they are going in this pilgrimage, they're moving in this pilgrimage. So there they are joined by one another character, that is Chaucer the Pilgrim himself. So we see a sense of defamiliarization that happening in this work. So अभी defamiliarization as a concept हमें देखने को मिला नहीं था इससे पहले। इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम विक्टर श्लॉस्की, रोमन जेकबसन ऑफ कोर्स अपने रशियन फॉर्मलिज्म में इस कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। लेटर ऑन इट विल बी टेकन अप बाय T.S. Eliot ऑल्सो, जिसमें वो अपनी इम्पर्सनल थियोरी ऑफ पोइट्री बता रहे हैं। तब उससे पहले एज सच डीपर्सनलाइजेशन नहीं था हमारे लिटरेरी वर्क्स में, बट इनके इस वर्क में ये देखा गया है, जहाँ पे चॉसर इज एबल टू सेपरेट हिज ऑथोरियल पर्सोना विद हिज राइटरली पर्सोना. So the author himself, the Chaucer, the author, he remains separate, and then we have he's Chaucer, the narrator character, and then we have another character called Chaucer, the pilgrim character. Chaucer, the pilgrim character, is part of the pilgrimage. So अब ये question confusing हो सकता है. आप मान के चलो total 30 pilgrims थे, including Chaucer, the pilgrim. अगर वो चौसर को काउंट नहीं कर रहे हैं तो 29 पिलग्रिम्स को हम काउंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है कि ये लोग कहाँ रुकते हैं. सो बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी and back in the day we did not have these modern means of transportation, so they take these various stoppages along their way. So here they have stopped in the city of Southwark, ठीक है. Where have they stopped? They have stopped in the city of Southwark in a hotel called Tabard Inn. ये सारे अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नेट के, मतलब इस पेज में मैं आपको 4-5 अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा रही हूँ. सो Tabard Inn is the hotel, the motel where they stop in the city of Southwark, and the owner of Tabard Inn is Harry Bailey. Harry Bailey is the host. He owns the Tabard Inn, and his name only appears once in the whole poem, and that is in the Cook's Tale. Cook's Tale में पहली बार हमें उनका नाम Harry Bailey पता लगता है. उसके अलावा थ्रू आउट हम उनको the host के नाम से ही जान रहे हैं, ठीक है. एंड जो बैकग्राउंड है स्टोरी का वो है पिलग्रिमेज है. देखिए जैसे सिखिज्म में लंगर का कॉन्सेप्ट होता है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर? सो गुरु नानक देव जी उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मोस्ट ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल इविल दे अराइज फ्रॉम द फैक्ट ऑफ inequality, because there is an inequality, there is the sense of inequality in the society because of in various distribution of resources. So we say that a lot of people, they don't want to engage amongst each other. Why? Because they feel that somebody is superior, somebody is inferior to them. So langar एक ऐसा concept बनाएंगे जहाँ पे everybody, they will come together, they will sit together, they will cook together, they will eat together. Everybody has to come down together. सो वो सिमिलर आइडिया उस टाइम पे चौसर को एक पिलग्रिमेज ही एक ऐसा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट मिल सकता था जहाँ पे वो सारी सोशल क्लासेस को एक साथ ले आते. वरना से एक नाइट जो कि एक नोबल कैरेक्टर है, नोबिलिटी को बिलोंग करता है, वो एक कुक या फिर एक ह्यूमन या फिर एक मिलर के साथ कभी वैसे एंगेज करता नहीं. तो क्योंकि चौसर को एक एस्टेट सटायर लिखना था, he had to create a background, he had to create a framework for the story wherein characters and people, representatives from all stratas of the society can come together, and for that pilgrimage was the perfect excuse, it was a perfect example. So hence he chooses pilgrimage as his background.
Host name is Harry Bailey, already told. Now the whole story, whatever he wants to tell us, whatever he wants to describe to us, he uses the frame narrative of a storytelling competition. So basically, because उस time पे again there was no Instagram, there was no Facebook, there was no YouTube, entertainment के लिए और कोई source नहीं था हमारे पास, तो हम मान के चल रहे हैं कि उस टाइम पे एक दूसरे को एंटरटेन रखने के लिए ये एक फोक ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ स्टोरी टेलिंग वो चल रहा था. सो व्हाट दे डिसाइड इज दैट इन टोटल नाउ वी हैव 29 plus 1 pilgrims, right? So I'll just tell you the formula and show the formula to you. So we have 29 plus 1 pilgrims, that is 30. Each pilgrim will tell 2 stories while going, 2 stories while coming back. So 30 into 2 into 2, so this comes down to 120 tales. Okay, in total 120 tales were to be told. This was the original plan, and whoever tells the best tales while coming back, he will be rewarded with an extra meal at the Tebart Inn. प्राइज में क्या था, प्राइज मनी में था an extra free meal that would be given by Harry Bailey, the host of Tebart Inn. So ये प्लान था कि इस तरीके से जो है हम एंटरटेनमेंट पर्पस से जो है ये स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन करेंगे. So उस वक्त you know there were all these tales, but then in his lifetime he could only complete 24 out of them, which is also a UGC previous year question. Only 24 tales he could complete, and 120 tales in total were originally planned. सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है. हैरी हिमसेल्फ विल बी द जज. हु विल बी द जज ऑफ द टेल्स? हैरी बेली, बिकॉज ही इज द वन गिविंग आउट द प्राइज, सो ही विल बी द जज ऑफ द कॉम्पिटिशन. ठीक है, ये कुछ आपके बेसिक जो है फैक्ट्स हैं. एस्टेट सटायर मैंने आपको समझा दिया है. ईच एस्टेट, ईच सोशल क्लास will have a certain number of representatives, certain number of characters to them, and each character will first be described in the general prologue of the Canterbury Tales, and then each character will tell you a tale or 2 tales, whatever. अब क्या है इसमें, सटायर यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आयरनी का यूज कैसे है, सटायर के सटायराइज कैसे किया जा रहा है. So Chaucer, the pilgrim character, he will have a notebook to himself, and when he will look at the other people, he will basically start writing down their personality, their outer appearance, and whatever, however they are behaving, वो सारा behavior वो note करते चले जाएंगे. यहाँ से हमें एक फैक्ट और भी समझ आता है कि एक बहुत ही रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन होके भी ये डिस्क्रिप्शंस में भी रियलिस्टिक नहीं है, बिकॉज हम जो भी उन कैरेक्टर्स के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हम चौसर के कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझ रहे हैं. सो उनका फिर एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इन द जनरल प्रोलोग. सभी कैरेक्टर्स का नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स एक्सेप्शन है, वो मैं आपको आगे भी बता दूंगी. सो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, और उनके कैरेक्टर के ऊपर आप एक प्री कंसीव्ड नोशन क्रिएट करेंगे, एंड देन ईच कैरेक्टर विल एंगेज इन दैट स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, एंड दैट इज व्हेन यू कैन रियली जज कि चौसर द नैरेटर जो है, क्या उन्होंने एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया था उन कैरेक्टर्स का या नहीं था, या फिर उन कैरेक्टर्स की जो आउटवर्ड डिस्क्रिप्शन है, क्या वो उनके इनर कैरेक्टर को, इनर पर्सनालिटी को ट्रूथफुली डिस्क्राइब कर पा रही है या नहीं कर पा रही. सो दैट इज समथिंग दैट इज टू बी सीन. नाउ लाइक आई सेड, each estate will carry a number of characters, most of them not acting in a righteous manner, except for 3 characters. So from each estate, he has pulled down one character who is an ideal embodiment of that particular estate, or who as a character, as a person, is not a corrupt person, who is a righteous person, who is a good person. So if we talk about the nobility से it is the knight character. ये भी UGC का previous year question है, ठीक है. इट इज नोबिलिटी क्लास से इट इज द नाइट कैरेक्टर हु इज शोन टू बी एन आइडियल एम्बॉडीमेंट ऑफ अ chivalrous knight. From the commoner class we have from the clergy class we have the poor parson. Parson is somebody who works at a church, so he is from the clergy, an ideal embodiment of a religious man. And then from the commoner class we have the plowman, the poor plowman. He is from the commoner class, who is a non-corrupt, non-exploitative ideal character. All right, so ये हमारी 3 ideal characters हैं, each representing one class. These characters, they are described in almost ideal figures, right? Moving forward, reminder के तौर पे मैं फिर से आपको ये एक background देना चाहती हूँ कि एक तो there was अच्छा, Black Death I forgot to mention. See, with the Anglo-Norman age, there was this idea of feudalism that had established itself in England.
फ्यूडलिज्म में पहले भी आई थिंक किसी क्लास में बता चुकी हूँ, फ्यूडलिज्म नोबिलिटी कल्चर जो है ये फ्रांस अपने साथ इंग्लैंड लेकर आया था। एंड इसमें जो है ये जमींदार, इंडिया में यू कैन अंडरस्टैंड इट वाया द मीन्स ऑफ द जमींदारी सिस्टम। देयर इज अ जमींदार, देयर इज समबडी हु इज अ नोबल मैन, समबडी हु इज अ फ्यूडल लॉर्ड एंड ही हैज अ ह्यूज लैंड टू हिमसेल्फ एंड उसके ऊपर वो टेनेंट्स को लेकर आएंगे। नाउ बहुत सारा काम था करने को एंड देन ही हैड दीज लेबरर्स हु वर वर्किंग फॉर हिम। देन कम्स द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ के आ जाने से यूरोप की 1/3 2/3 पॉपुलेशन एंड सॉरी 1/2 पॉपुलेशन एंड इंग्लैंड की फॉर दैट मैटर 2/3 पॉपुलेशन वाज वाइप्ड ऑफ। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हेन पीपल रिकवर फ्रॉम द ब्लैक डेथ, अब होता क्या है कि काम उतना ही है, number of jobs is it remains that much because England was a huge nation, तो काम उतना था, लोग बहुत कम हो गए थे and these feudal lords they could not survive without their laborers because their lands were pretty much of no use to them if they were not being reared. If there was no agricultural practices happening on them, then the lands were pretty useless to the feudal lords. So that is what happens कि अब laborers कम हो गए थे, जो लोग उस एग्रीकल्चरल लैंड को यूजफुल बना सकते थे वो कम हो गए थे। फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो अभी भी थे बिकॉज मोस्टली फ्यूडल लॉर्ड्स इन लोगों के पास अपने रिसोर्सेज थे, तो मोस्ट ऑफ देम दे रिमेन्ड। इट वाज ऑफ कोर्स द लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी दैट वाज मोस्ट हिट बाय द ब्लैक डेथ। दे वर द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स द मोस्ट। तो होता क्या है कि अब जो बेगर्स बिकम चूजर्स इन अ वे, जैसे कि एक बहुत कॉमन सेइंग है दैट बेगर्स कांट बी चूजर्स, ironically here what happens is that beggars they become choosers, राइट। सो लेबरर्स जो है अब उनकी बोली नहीं मतलब वो अब मतलब गिरे नहीं जा रहे थे फ्यूडल लॉर्ड्स के आगे कि प्लीज हमें काम दे दो या हमें अपनी जमीन दे दो। नाउ दे काइंड ऑफ बिकेम द चूजर्स, उन पे बोली लगने लगी। ठीक है, तो यहाँ से जो लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी है इट स्टार्टेड राइजिंग एंड दे रियली डिडंट गिव अ सिंगल डैम अबाउट religion or church or the king or the queen, so as to say. They were like, listen, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता. So they just wanted work. And now they also held that power, that authority in their hand, where they could go and work for a feudal lord who was going to pay a better price for him. So that gave them a lot of authority, a lot of agency, a lot of power. So एक तो ये social change हो रहा है. Then of course there was the idea of the about the peasants revolt. I have already told you. It was led by Wat Tyler. So the peasants revolt was also there. All these reasons combined, it gave Chaucer a very correct time. I mean, he was living in a very right time to be able to write a work like this. All right. तो काफ़ी गेम चेंजिंग वर्क था ये। मतलब अगर मैं इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री की बात करूँ, सोशल हिस्ट्री की बात करूँ, सो आई कैन डेफिनेटली से कि ये एक वाटरशेड मोमेंट था इंग्लिश हिस्ट्री के लिए भी और इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी। एक और बात ध्यान रखिए, इस वर्क को उन्होंने जो है heroic couplets में लिखा है। Heroic couplets is nothing else but rhyming lines of iambic pentameter. Rhyming lines of iambic pentameter. तो इसका राइम स्कीम कुछ ऐसे बनता था, ए ए बी बी सी सी डी डी सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये राइम स्कीम ए ए बी बी सी सी डी डी कपलेट्स बन रहे थे यहाँ पे हमारे। ऑल राइट, क्लियर है सबको इतना? So yeah, I think this is something that I pretty much explained. अब सेटिंग की बात करते हैं। सेटिंग देखिए, जो ओरिजिनल देयर इज एन ओरिजिनल पिलग्रिमेज टू द श्राइन ऑफ सेंट कैंटरबरी ऑफ सेंट थॉमस बेकेट। However, it did not happen in the month of April. Chaucer chose a very perfect time for the framework of his story. He chose the month of April. Again, UGC previous year question. It was the springtime. And I think as students of literature, it won't be very difficult for you to guess. Spring is the season of transition, right? In this season, we transition from the winters to the summers, right? जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे, तो ये स्प्रिंग वो अच्छे दिन आएंगे का प्रॉमिस लेकर आता है अपने साथ।
because so much of social and political upheaval was there, because the culture, the society of England was changing in general. So I think for him, for Chaucer, spring became that perfect time, because it was a season of transition. He wanted to reflect the transitions that were happening in his society through the season that through the time that he chooses for his poem. Also, number two, Chaucer was greatly inspired by the French romances. Of course, as we all know, he was greatly inspired by the French romances, and these romance works were majorly written during the springtime, in the month of April or May. So that also became an additional reason why he chose to keep spring and April as the timeline for his story. अगर मैं बात करूँ स्टोरी टेलिंग में किसी पर्टिकुलर सोशल हायरार्की की, अगेन इट इज सो इंटरेस्टिंग टू नोट, because the whole social order had gone topsy turvy. He wanted to, through his narrative, he wanted to show that state of, whatever, this distortion of social order. He wanted to show that through his framework, and for that he very carefully, वो जो स्टोरी टेलिंग का जो कंपटीशन है, वो सोशल क्लासेस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, या फिर जो सोशल हायरार्कीज हैं वो डिस्टॉर्ट करके वो अपनी स्टोरी में जो है, अपने फ्रेम नैरेटिव में दिखाएंगे. इसके थ्रू वो यही दिखाना चाह रहे थे कि देखो सोसाइटी कितनी चेंज हो रही है. ठीक है, क्लियर है सबको इतना? मैं अभी बीच में रुक के सॉरी आंसर कुछ और नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे बहुत कुछ कंप्लीट करना है इस क्लास में. आप क्वेश्चंस को एंड के लिए छोड़ दीजिए. इनफैक्ट वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना. मैं रोज कमेंट्स चेक करती हूँ. मैं पर्सनली कमेंट को देखकर, मैं अपनी पर्सनल आईडी से देखती हूँ इनफैक्ट. तो मेरे नाम से आपको अगर कोई लाइक या कॉमेंट दिखता है, बिलीव मी इट विल बी मी. सो आप कॉमेंट वहाँ नीचे डाल सकते हैं. ठीक है, और सेशन को लाइक कर दो यार, सेशन को लाइक कर दो प्लीज. ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगी क्लास को और आगे लेके जाने की. ऑलराइट, अब कुछ और फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको इसके बारे में जानने होंगे, जो पास में कई साल पहले पूछे गए हैं, ऑफ्टनली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं हमारे. सो द होल poem, it is written, the majority portion of the tales, they are narrated in verse form, except for two tales. One is the Parson's Tale and one is the Tale of Melody. ठीक है, the Tale of Melody that was narrated by the fictitious Chaucer himself. Okay, so these are the only two tales that have been described by Chaucer, that have been described in the form of prose. Rest all the other tales, they are narrated in verse form. And two tales are narrated by the fictitious Chaucer himself. One is the Tale of Melody, the other is Sir Topus' Tale. Okay, so Sir Topus' Tale and Tale of Melody told by Chaucer himself. प्रोज टेल, पार्सन्स टेल, टेल ऑफ मेलबी. अब यहाँ से एक और यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ. हाउ मेनी, बिकॉज ही वांटेड टू कंप्लीट 120 स्टोरीज बट ही कुड ओनली टेल 24. सो यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछना चाहूंगी, हाउ मेनी पिलग्रिम्स पार्टिसिपेटेड इन दैट स्टोरी टेलिंग. मतलब जितनी स्टोरीज हमारे पास हैं, बेस्ड ऑन दैट मैं आपको बता रही हूँ कि 24 टेल्स हैं, ये इतनी ही वो कंप्लीट कर पाए थे. तो इसमें नैरेटर्स कितने हुए, या कितने पिलग्रिम्स थे जिन्होंने प्रोबेबली पार्टिसिपेट किया? ये मेरा क्वेश्चन है आपकी तरफ. एक बार आप इसको आंसर करिए प्लीज, मैं आपको आगे बताऊंगी फिर. अच्छा, प्रोलोग में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, चॉसर द नैरेटर कैरेक्टर, ही विल गिव यू अ फिजिकल अपीयरेंस, अ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेनी कैरेक्टर्स, बट 3 कैरेक्टर्स. एक तो हिमसेल्फ, चॉसर द पिलग्रिम कैरेक्टर वुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड. Then we have the nun's priest character, not described. Second nun character, not described. So these 3 characters, we don't find any physical description of them in the prologue to the Canterbury Tales. For rest of the all other pilgrims, we have a description. चलिए, बहुत ही बढ़िया. It's good to see the answers. The right answer is 23. So all the other pilgrims will get the chance to narrate one tale only. ठीक है, the cycle was as such. It is only Chaucer, the pilgrim character, who will get to tell 2 tales. ठीक है, so narrators were 23, but tales we have 24. 1 tale extra because he gets to tell 2 tales. So ये पॉइंट याद रखो. ये मेरे पेपर में आया था, मुझसे गलत हुआ था, तब मैंने इतना डिटेल में इसको पढ़ा नहीं था. ठीक है, 23 narrators we have, but tales are 24. Okay, क्लियर है सबको ये फैक्ट? आगे बढ़ते हैं. How many female characters are described in the prologue to the Canterbury Tales? So we have only the wife of Bath
and the prioress. These are the only two female characters who, for whom we find a description of them in the prologue to the Canterbury Tales. Whose is the last portrayal? It is the Pardoner's. The Pardoner's portrayal is the last in the general prologue. The first is of the knight. Knight का description first आता है. Knight की tail भी first है. ये point याद रखिए. Knight का description भी first है. ओके और इनका टेल भी फर्स्ट है. लास्ट डिस्क्रिप्शन पार्डनर का है. हैरी बेली का नेम इज ओनली मेंशन इन द कुक्स टेल, अदरवाइज वी ओनली रिकॉग्नाइज हिम एज द होस्ट. मतलब बिगिनिंग से वी आर नॉट मेड अवेयर ऑफ हिज नेम. इट इज ओनली इन द कुक्स टेल लेटर दैट वी फाइंड आउट अबाउट हिज नेम, हैरी बेली. ओके, so these are the characters who represented the clergy or who belong to the church ecclesiastics: the prioress, the monk, the friar, the parson, the summoner, the pardoner, and the clerk. From the chivalry, we have only two representatives: the knight and his son, the squire. And the remaining characters: the cook, the reeve, the miller, the clerk, the scholar from Oxford, the man of law, the lawyer, the man of medicine, the physic, all these characters, they belong to the commoner class. Of course, some of them being educated ones, literate ones, and some of them being illiterate characters. अब नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है कैरेक्टर्स इन द प्रोलोग. तो प्रोलोग में जो कैरेक्टर्स की हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है 27 कैरेक्टर्स की, उनकी डिस्क्रिप्शन और उनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन पेपर में आपको एज कीवर्ड्स पूछी जाती है. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है. सो सब के सब तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्लास में टाइम हमारे पास कम है, लेकिन ऑफकोर्स जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं मैंने उनको अपनी पीपीटी में इन्वॉल्व किया है, इंक्लूड किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द नाइट. The knight is the first pilgrim that Chaucer describes in the general prologue. He is the first one whose description is there. He is also the first teller of the tale. So first storyteller also he is, and also he is the first one to be described in the prologue. He represents the medieval Christian hero character. He is that perfect ideal chivalric hero character. He had in total participated in 15 great crusades. ये भी UGC का previous year question है. Total 15 crusade wars he had been a part of, and he was also a very, very brave and chivalrous character. The narrator greatly admires him in the general prologue. The next important character that we have is the wife of the bath. The wife of the bath पे बहुत सारे previous year questions बने हैं, because she is considered to be a prototype of a feminist. अभी तक फेमिनिज्म, आज मैंने पेड क्लास में भी अपना फेमिनिज्म में शुरू कराया लिटरेरी थियोरी में. सो ये जो कैरेक्टर है, जब तक फेमिनिज्म आया ही नहीं था, बट ये ऑलरेडी उस टाइम पे एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर थी, बिकॉज शी वॉज वेरी लिबरल विद हर मैरिज लाइफ एंड हर सेक्स लाइफ. So that became, because domesticity and sex, these are the two things that becomes a weapon for the patriarchal society to subjugate the women. So she uses these things, as tools, as the weapons for herself to find herself in a more liberated situation. So wife of Bath, she is a woman character who belongs to the city of Bath. ये भी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मैम ये Bath word का क्या मतलब है? So Bath is a city in England. She belongs to Bath. ठीक है, and on the banks of river Avon river you would recognize. किसके साथ recognize करोगे, मुझे याद करके बताओ. Bard of Avon किसको कहा जाता है? एक बड़े फेमस इंग्लिश राइटर को Bard of Avon के नाम से जानते हैं, किसको कहा जाता है? The wife of Bath, she belongs to the city of Bath, which is situated on the banks of river Avon, and her husband's name is not mentioned, but we definitely know that she's been married 5 times. ठीक है, she's had a total of 5 marriages. By profession, she is a seamstress. Seamstress आज के टाइम में अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो टेलर आंटी, शी वॉज अ टेलर बेसिकली. ठीक है, सिलाई बुनाई करती हैं जो. वेरी गुड. सो इट इज विलियम शेक्सपियर. परफेक्ट. सो बार्ड ऑफ एवॉन इज विलियम शेक्सपियर. सो ऑल्सो शी इज डेफ इन 1 ear. She can only hear from one side, and also she has a gap between her teeth, which उनके जो front teeth है
उनमें गैप होता था. आज जैसे इंडिया में आई थिंक कुछ लोग मानते हैं कि इफ यू हैव अ गैप बिटवीन योर फ्रंट टू टीथ यू कंसिडर टू बी लकी, you will assimilate a lot of money. In Chaucer's time this was believed to be a beauty mark, a beauty characteristic, right? And she had traveled to a lot of pilgrimages. She had been to Jerusalem 3 times. Very important. ये भी I think UGC का previous year question ही है. Not sure but I think है. She had been to 3 pilgrimages to Jerusalem. She had been on 3 pilgrimages to Jerusalem, right? And Europe also. She was well traveled. She was well traveled across Europe. Is that clear? Next we have the pardoner. The pardoner is the one who is the last to be described. And the pardoner का मैं आपको basically बताऊँ. Pardon word का मतलब क्या होता है? आपको जब किसी ने आपको कुछ कहा और आपको वो सुना नहीं तो आप उनको बोलोगे pardon me. आप बेसिकली उनको बोलोगे I'm sorry but pardon me का मतलब I'm sorry I didn't hear you the first time. Can you please repeat what you said? Pardoner का काम होता था to sell indulgences. Indulgence word यहाँ important है. So indulgences were basically grace from the church. So these were graces in the form of objects from the church. So say you had committed a crime. So first you would confess to the father about the crimes or the sin that you had committed, and then you can buy these indulgences from the church and you would basically be pardoned for your mistake or your sin, whatever. Weird concept but like whatever. So pardoner का काम होता है ये indulgences देना. But because this is a papal job यानी related to the Roman Catholic tradition, he was not supposed to make money or earn money out of it or get rich out of it, but he was basically fooling around with people. He was just fooling people, and that becomes a very deterministic factor in his description. Also he has very long greasy hair. The hair are described as yellow का मतलब he was a blonde head. He was a blonde, and he is also beardless. To be beardless in Chaucer's time was considered to be a sign of gender ambiguity. So there are certain suggestions, there are certain facts which suggest that he might be a homosexual. So because of the fact that he was beardless, so I'm not saying this is what I believe. I'm saying this is what was believed back in time. Okay, and he also had a gift for singing. He could sing very well, and whenever he had time, he would also preach. एक बहुत ही famous saying है, it's a very famous aphorism in English, practice what you preach, right? Moral education की classes में हम सबने school में ये पढ़ा होगा. So आप जो बोलते हो, आप अगर अच्छा बोल रहे हो तो वो अच्छे काम आपको खुद practice करने चाहिए. So this is the person who will completely turn it upside down. He will turn the aphorism upside down because he did preach well, but he did not practice whatever he preached. The next we have the miller. The miller, who is a miller? Miller is somebody who owns a mill, who runs a mill. So back in the day, whatever farm produce used to be there, say from the millet or from the wheat, from the rice. So उसको flour बनाने के लिए, जैसे जो आटा चक्की होती है हमारे यहाँ पे. So it was this person. And जो miller है, he is a very bawdy character. Bawdy is somebody who is very outrageous, who's very out there. He flouts social norms. So after the knight had told his tale, the monk was next in order to tell his tale. Harry Bailey made sure that he followed that social hierarchy. But because he was extremely drunk, he got extremely drunk, he will intervene and he will fight into telling his next tale. The next tale, the second tale in the story will be told by him, the miller. So ये बहुत important fact है हमारे लिए समझना, because like I said, Chaucer वो disturbed social hierarchy दिखाने की कोशिश कर रहे थे. तो नाइट के बाद मंक को अपनी टेल ना बताने देना और मिलर को घुसा देना उसमें, और फिर मिलर अपनी सेकंड टेल बताएगा स्टोरी में. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसाइसिव चॉइस थी जो चॉसर ने अपनी स्टोरी लिखते हुए बनाई होगी. उनका जो एस्टेट सटायर का पर्पस है वो बहुत प्रिसाइसली सॉल्व हो जाता है इस ऑर्डर से. ठीक है. सो द मिलर इज अ स्टाउट वन. स्टाउट का मतलब है ही इज शॉर्ट एंड ही इज अ बिट चबी. He has a wart on his nose. Wart is मस्सा कहते हैं जिसको हिंदी में. So he has a wart on his nose and he also has a big mouth, both literally and figuratively. मतलब he will speak a lot and he will speak quite nonsensely at that. So he seems to be enjoying the whole drinking culture. They were sitting and consuming wine, so he was enjoying all of that. He also liked overturning the social norms.
फॉर एग्जाम्पल वो जो होस्ट ने जो बहुत केयरफुली प्लान एक सोशल ऑर्डर, स्टोरी टेलिंग ऑर्डर मेंटेन किया था, वो उसको ब्रेक कर देंगे. ही विल ऑल्सो रिप द डोर ऑफ द हिंजेस. टेबार्ड इन के का गेट भी उखाड़ देंगे ये, ठीक है. जैसे सनी देओल ने वो पंप उखाड़ दिया था, ये टेबार्ड इनका गेट उखाड़ देंगे पूरा का पूरा. एंड ही टेल्स अ टेल दैट इज समवॉट ब्लास्फेमस, ridiculing religious clerks, scholarly clerks, carpenters, and women. His story is also a very it is a kind of a story that is highly bawdy, it is highly vulgar and highly misogynistic. ठीक है, clear है. So ये है आपके पार्टनर और मिलर. नेक्स्ट इन लाइन इज द मंक. द मंक का भी यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट व्हाट वाज इट दैट द मंक रियली एंजॉयड. सो मंक इज समबडी हु इज अ सन साधु, ठीक है, समबडी जिन्होंने दुनियादारी त्याग दी है और वो जो है अब भगवान की मेडिटेशन में वो अपना पूरा जीवन बिता लेंगे. आपने जैन मंक्स, बुद्धिस्ट मंक्स को देखा होगा कैसे वो दुनियादारी त्याग के जो है आध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं, लाइक दैट. सो विद दिस मंक ऑल्सो यू वुड हैव एन एक्सपेक्टेशन लाइक दैट, बट ही वॉज नॉट लिविंग अ लाइफ लाइक दैट. He was in fact he really enjoyed luxury and those luxurious things of life. His most favorite activity was hunting. Monks, they make sure that they do not kill another life. अपने जैन monks को देखा होगा, they wear a covering on their mouth because they say that even when we speak, we talk, we breathe, we are killing so many living organisms. So in order to avoid that, we will wear a covering on our mouth. And this monk, for him, his favorite activity was hunting, and he also wore leather boots, and he loved wearing fur made of हंटेड एनिमल्स. तो जिन एनिमल्स को वो हंट करते थे उनके लेदर से वो बूट्स बना के पहनते थे और उनके कवरिंग से वो फर कोट बना के पहनते थे. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिम, राइट. सो हंटिंग के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है आपका यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि इनका जो है फेवरेट एक्टिविटी क्या था, वो था हंटिंग. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द पार्सन. द पार्सन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ही इज द ओनली कैरेक्टर in the ecclesiast, in the clergy characters, who is a truly devout one. He is living a true Christian life, and he is truly devoted to the path of God and divinity. He lives in poverty, but he is rich in his thoughts and deeds. Then we have the squire character. The squire character was the son of the knight. He wore luxurious clothes. He was a very good-looking person. He had curly hair. He was curly haired. This is a good description about him. He was youthfully handsome, and he also loved dancing and courting. Courting means he's believed to be a womanizer. He was somebody who had many female friendships, a lot of partners, so as to say. Then we have the cook. Cook से भी UGC का previous year question बना हुआ है. That he had an open sore on his leg. So the question was, इनमें से कौन सा pilgrim है जिसकी leg पे there was an open sore? So it was the cook. No much description is given about him, but the only description that is given about him is that he had an open sore on his leg. Cool. Next, the second nun, like I had mentioned earlier, the second nun as a character is she's a character who's not described in the prologue of the Canterbury Tales, but later on she will tell a saint's life for her tale. इनकी जो tale है, it is more of a miracle story. It is more of a miracle story. Okay. Then we have the nun's priest. Like the second nun, even the nun's priest is not described in the general prologue, but his tale is very important. He will tell the tale of Chanticleer. Chanticleer की tale है who is a roost. So this is a very famous example of a beast fable. Very important tale for us. Prescribed in Delhi University syllabus, इसलिए भी ज़्यादा important है. ये ड्यू में हमने पढ़ा हुआ है और क्या कहते हैं, anyway मैंने आपको पहले भी बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो he will tell the tale of Chanticleer, which is in the form of a beast fable. Last but not the least, the narrator. The narrator, Chaucer himself. The narrator presents himself as a gregarious and naive character. Gregarious is somebody who enjoys social company. Naive is somebody who's a bhola bhala person. Later on, however, the host will accuse him that you're not really a very gregarious character because you're not getting involved in the storytelling competition. You're being really silent and sullen. ठीक है, आप कोने में बैठ के साइलेंटली सबको ऑब्जर्व ही किए जा रहे हो, आप कुछ बात ही नहीं कर रहे हो,
Because why is he silent? Because he's the one who's observing everybody. So Chaucer, the narrator character, and Chaucer, the pilgrim character, there's a very fine line between them. ठीक है? There's a very fine line between them. Please spam मत करिए comment section को. So there's a very fine line between the Chaucer, the narrator character, and Chaucer, the pilgrim character. All right. So yeah. वो सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ कुछ नोट्स बना रहे हैं, एंड ऑल्सो अपनी मेमोरी के बेस पे मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन दैट द चॉसर द नैरेटर कैरेक्टर विल गिव अस, इट इज फ्रॉम मेमोरी. इसलिए दैट ऑल्सो काइंड ऑफ मेक्स अस क्वेश्चन इफ द डिस्क्रिप्शंस दैट ही हैज गिवन अस ऑफ दीज कैरेक्टर्स इज इन फैक्ट एक्यूरेट और नो, बिकॉज you know, most part of it comes out from his memory. He remembers it and then he writes about it. So that makes us question the legitimacy and authority of these descriptions. All right. So ये कुछ important characters थे जो prologue में आपके describe थे. अब एक बार थोड़ा सा general prologue के बारे में बात कर लेते हैं. The general prologue of the Canterbury Tales was composed in a total of 857 lines. कितनी lines में है? 857 lines में है. The general prologue जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन में नैरेटेड है, एंड इसके अंदर जो है एक जनरल डिस्क्रिप्शन दी गई है ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, जो मैंने वो फैक्ट्स आपको जो है पहले ही बता दिए हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ओरिजिनली बोरो किया था फ्रॉम अ कपल ऑफ वर्क्स. फॉर एग्जांपल द 1001 नाइट्स, अरेबियन टेल्स, देन अविड का मेटामॉर्फोसिस, बोकाशियो's डेकामेरॉन. All these works Chaucer had read. So the idea of compiling these stories together, stringing these stories together to create a frame narrative, he had borrowed the idea from these works. And like mentioned earlier, the pilgrimage was the perfect excuse for all these social classes to come together, sit together, eat together. The characters will reveal themselves in their choice of tale. So first you will create a notion about the character through the general description. But later on, it is through the choice of tales and what they do with it that we understand the characters in detail, in their reality. All right. So yeah, ये सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. All right. कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा फैक्ट्स में एक बार जनरल प्रोलॉग है, इसमें से कुछ फैक्ट्स हैं जो थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ. हम लोग इसको करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. So it is the month of April. ठीक है. The showers were sweet. I've given an English translation also alongside. So it was the month of April. The showers were very sweet, and when Zephyrus eke with his sweet breath, that is, Zephyrus is a Greek mythological character who denotes the west wind, who is the harbinger of the west wind. All right. So yeah, then there is the mention of the constellation of Ram, which stands for Aries. Aries, the zodiac. Because during that time, Ram constellation is there in the sky. You can see it very clearly. That is the season of Aries, of course. And yeah, next आ जाते हैं. So pricketh him nature in his courage. So nature rouses them in their hearts. So this is, he gives a description of the springtime essentially. We see these folks who have taken on this pilgrimage. They are together on this pilgrimage. They all belong to different professions. Hence, this is a work that is an estate satire. They belong to different professions. They're pilgrims that denote to different professions. The act is holy, but we are going to find something else about these people. In Southwark at Tebart, as I lay. So here in the general prologue only, the narrator will tell himself that another part of me, another subjective part of me, you will find in the tale itself. That is where I lie in Southwark at the Tebart Inn. Ready to wend on my pilgrimage, matlab ready to go, and to Canterbury we are to go with full devotion and courage in our hearts. Of sundry folk by adventure by fall, various sorts of people have come together here to join this pilgrimage. All right. So these are some important facts that I wanted to mention. Right. So had I spoken with him ever return, he says that I have talked to all of them. And in my opinion, whatever I could gather from their personalities, I have tried to present here to you. I will also try to tell you how they look. I will try to tell you what their physical description is, what their circumstances are, what their social rank is. I will give you a description of their clothes, their hair, their face, their body, their social rank, and their social situation or their circumstances. Based on that, you can judge it on your own, what you are to say about them. Okay. So ये अगेन एक क्लास में मैं जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आ सकती थी एग्जाम रेडी तरीके से उतने मैं लेके आने की कोशिश की है.
ठीक है, सो ये था आपका कैंटरबरी टेल्स। बहुत बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसमें जोड़े हैं, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड पॉइंट्स हैं आपके पेपर के, तो ऑफ कोर्स फिर से ये रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस है। वैसे भी अब इस वक्त यूजीसी नेट इस साल जो पेपर बना रहा है, ऐसे क्वेश्चंस वो 3 साल पहले बनाता था, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे आपके पास। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चंस ऑल्सो मैंने कोशिश की है कि मैं सिर्फ कैंटरबरी टेल्स से ही ना यूज करूं, चौसर के दूसरे वर्क्स के क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि साथ साथ मैं आपको अदर वर्क्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए बताइए। The lines under an hill there is a cave which of the song may not have been taken from. ये lines कहाँ से ली गई हैं? Confessio Amantis, the Parliament of Vows, the Canterbury Tales या फिर none of the above? बताइए। Sure मनमोहन। Okay, the majority of answer we're getting option C, the Canterbury Tales. The right answer is Confessio Amantis. ठीक है, ये हिल और केव का मेंशन कैंटरबरी टेल्स में कहीं पे भी नहीं है। अभी मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, इफ यू हैव नोटेड, देयर इज नो मेंशन ऑफ द हिल और अ केव और व्हाटएवर। कन्फेशियो अमांतिस में ऐसा है बिकॉज कन्फेशियो अमांतिस बेसिकली ड्रीम विजन में लिखी गई है। द पोएट ही विल फॉल asleep, ठीक है, and the speaker of the tale will fall asleep, and then we also have a confession of Amans. यहाँ से मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन बता देती हूँ। confession of Amans, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। ये कन्फेशन किसको करेंगे? वो वीनस को करेंगे। हु इज वीनस? द गॉड ऑफ लव। However, in the end, Venus will chide a man for falling in love because he's a senior citizen. He's a senior character, and he will ask him to not really get involved, to not get involved in such matters of heart and love. It is time for him to really take the path of God now. अब तुम्हारे जाने के दिन आ गए तो भगवान का नाम लो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। Next question. Speculum Meditantis, a French work, has been written by स्पेक्युलम मेडितांतिस। जैसे कि मैंने बोला, मैंने 64 की एज के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें डाले ताकि मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। स्पेक्युलम मेडितांतिस किसने लिखा है? जॉन लिटगेट, थॉमस क्लीव, जॉन गावर, जॉन स्केल्टन। जॉन गावर, आंसर करिए प्लीज। जी, ऑप्शन सी। ओके, गुड। द राइट आंसर इज जॉन गावर। सो कन्फेशियो अमांतिस Vox Clamentis and Speculum Meditantis. These are the three major works that are written by John Gower. John Gower was also called Moral Gower by Chaucer. Why? Because he was too didactic, he was too moralistic. He wrote Confessio Amantis on the request of King Richard II. Richard II, he personally asked John Gower to not write so much of didactic or moralistic work, and he asked him to write something which was maybe say on the theme of love. So he decides to write the work Confessio Amantis, but then he also does moralizing. जैसे मैंने आपको बोला, वीनस ही एंड में जो एक moral angle दे देंगे उस poem में. So in the poem also, in the beginning, John Gower mentions that I have tried to come the halfway, I have tried to come the midway.
because I want to write a poem that is didactic and moralistic, and the king himself has requested me to write a poem on love. So I'll come the midway, I'll talk about love, but in the end I will give my moral sermon. So that is the product of that is Confessio Amantis. Besides that, Vox Clamentis, Speculum Meditantis, these are the other two important works that we find of him. Okay? Right. But yes, Anjali, absolutely. That quote. Wonderful. Which work of John Gower is inspired by the Peasants' Revolt of 1381? इनमें से कौन सा वर्क है जॉन गावर का विच वॉज इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स ऑफ 1381, द पेजेंट्स रिवोल्ट लेड बाय वॉट टाइलर? कन्फेशियो अमांतिस, वॉक्स क्लामेंटिस, स्पेकुलम मेडिटांटिस. मैं ये वेबसाइट पे डलवा दे, मैं अपनी एप्लीकेशन पे डलवा देती हूँ. एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड, एक सेशन लूंगी यार, बिकॉज स्टूडेंट्स को आई थिंक फ्री पीडीएफ मिलता नहीं है. आई विल ब्रिंग सम स्क्रीनशॉट्स ताकि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा, बिकॉज मेरे फ़ोन में नहीं चलती ऐप, सो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा सकूँ कि हाउ कैन यू नो वट एवर इज़ द प्रोसेस टू go down to my community and or wherever you can find the free PDFs. I'd like to do a little session on that. So please give me a day or two. ये सब कुछ मैं अपलोड करवाती हूँ अपने फ्री पीडीएफ सेक्शन में. ठीक है, अभी नहीं, एक्चुअली अभी नहीं कराया है, टू बी ऑनेस्ट अभी नहीं कराया है. मैं इकट्ठा है 2-3 दिन का पीडीएफ करवाना चाहती हूँ, आज करवा दूंगी, और प्रॉब्ली आज ही या फिर कल एक वीडियो भी ले लूंगी इसके ऊपर, हाउ कैन यू डाउनलोड दीज लिंक्स ऑन फ्री. बट उसके लिए ऐप पे जाना पड़ेगा, तो ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप डाउनलोड कर लो. ठीक है, चलो देखो, कन्फेशियो अमांतिस तो फॉर श्योर नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया. इट वाज वॉक्स क्लामेंटिस. वेरी गुड. ऑप्शन बी वॉक्स क्लामेंटिस, इंस्पायर्ड बाय दिस. जॉन गावर डाइड इन द ईयर 1407, 1408, 1400, 1410. बताइए, जॉन गावर डाइड इन द ईयर प्लीज डाउनलोड दी ऐप मानसी. ऑप्शन बी आ रहा है आई थिंक मेजोरिटी में. आई थिंक एक दूसरे को देख के आंसर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? 1408 इज द राइट आंसर. अगेंस्ट विच कंट्री वाज इंग्लैंड फाइटिंग इन द 100 Years War? ये आई थिंक मैंने कल भी बता दिया था, या पहले जब एंग्लो नॉर्मन एज कर रहे थे. 100 Years War इंग्लैंड किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा था? जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इटली. Very good. Goes without saying. Option C, France. Leaders from which two political movements quoted Piers Plowman? Piers Plowman किन political revolutions के leaders ने अपने works में इस work को quote किया था? French and American revolutions, Russian Revolution, November Uprising, Irish Rebellion, Scottish Insurrection, the Peasants' Revolt, and the Protestant Reformation. Piers Plowman is the only work to be known by William Langland. ये भी UGC का previous year question है. Also, we are not exactly sure कि ये इन्हीं का work है, इसलिए इनको इसका ascribed author माना जाता है. मतलब हम मानते हैं कि इन्होंने लिखा है, बट वी आर नॉट 100% श्योर कि इन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है. माना जाता है कि इन्होंने लिखा हुआ है. पियर्स प्लाउमैन जो है, ये भी ड्रीम विजन में है. ये भी एक सोशल एलिगोरिकल वर्क है, जिसके अंदर एक ड्रीम विजन में जो स्पीकर है वो डिफरेंट स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी से अलग अलग कैरेक्टर्स को देखेगा, राइट फ्रॉम अ बेगर, अ पुअर फार्मर टू द किंग हिमसेल्फ. एंड उसके थ्रू जो है एक सोशल डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की गई है. आप लोग मेजोरिटी कह रहे हैं ऑप्शन डी. एक आंसर ऑप्शन ए का भी आया है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. रशियन रेवोल्यूशन एंड नवंबर अपराइजिंग के लीडर्स ने इस पोएम से कोट किया था. हाउ डिड चॉसर्स पार्डनर मेक हिज लिविंग? ये मैंने आपको अभी भी बताया. दिस इज अ यूजीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आई थिंक ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जितना मुझे ध्यान आ रहा है. दिस वन डेफिनेटली इज. सारे नहीं है शायद, कुछ हैं इसमें से. सो या, Chaucer's pardoner, how does he make his living? By selling stolen cattle from the neighborhood orchard, by selling indulgences to those who committed sins, by pardoning those who stole property or committed other crimes, by assisting the friar in church services.
अभी अभी बताया ना, बिल्कुल सिंपल है इसका तो आंसर, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो ही बेसिकली सोल्ड इंडल्जेंसेस to the people who committed sins. So Christianity, it mentions 7 deadly sins. It mentions 7 deadly sins. All right. And also he was selling these fake relics. ये भी note कर लो. He was selling fake relics to the people. He was telling these people that these are the bones of some ancient, some monk or some saint, but they were actually nothing else but pig bones. Dug out pig bones. Okay. लोगों को बोल रहे थे कि किसी कोई पुराने रोमन कैथोलिक सेंट हैं, उनकी बोन्स हैं, ये उनके रेलिक्स हैं, बट फेक रेलिक्स थे, वो एक्चुअली पिग बोन्स थी. ओके, थैंक यू अनुभव. Next question. When Chaucer describes the friar as a noble pillar of order, he is using irony, simile, understatement, personification. कविता मेरी क्लासेस में मैं अलग मटेरियल से पढ़ाती हूँ, वो पीडीएफ्स अलग हैं, बुक्स अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है. तो आप अगर बैच ज्वाइन करते हो तो आपको मेरे पीडीएफ्स अलग से मिलेंगे, बुक्स वो आप लेते हो बुक्स अलग से हैं, सब कुछ अलग है. ठीक है. नहीं प्रेम, इट शुड बी ऑप्शन बी. वेरी गुड. हम सबको पता है कि जो फ्रायर है, ही इज नॉट द आइडियल एम्बॉडीमेंट of a clergyman. So when he calls him the noble pillar of order, he was definitely not that. So when you mean one thing and you say the opposite of that, that is when it is called an irony. This is a case of irony. You mean one thing, you say the opposite of it. That is verbal irony. John Dryden described a major English poet as a rough diamond and must first be polished ere he shines. Identify him. Geoffrey Chaucer, John Gower, George Herbert, Robert Herrick. Option B, option A. Okay. The right answer is Geoffrey Chaucer. He calls Chaucer that rough diamond who must first be polished. Why polished? Because he wrote in medieval English, no? He wrote in medieval English. So it's not, of course, it's not understood by most of the speakers and readers of modern English. So he must first be polished and then enjoyed. Chaucer's first work, The Book of the Duchess, is a dream poem on the death of. So again, this is a UGC previous year question. Duchess of Malfi, Duchess of Lancaster, Duchess of Scotland या Duchess of Paris? बताइए. Very good. The right answer is Duchess of Lancaster. So her name was Blanche. I think I've already mentioned about her. Her name was Blanche, and she was the Duchess of Lancaster. She was a close friend of Chaucer's, and when she died, her husband, John of Gaunt, asked Chaucer to write a poem in her respect, as a tribute to her, so that he could sing it, he could recite it at her funeral service. So this is the poem that he wrote, The Book of the Duchess. Chaucer satirizes the monk because, again, UGC previous year question, he's too concerned with courtesy and matters of etiquette. He cheats the poor peasants by selling them false religious relics. He courts favor of wealthy people but spends no time with poor people. He spends too much time hunting and too little time on religious duty. हाँ जी, ताइबा खान बताइए. I'll take your name. Hi Taiba, how are you? I hope I'm pronouncing your name correct. अच्छा, हाथ बात मत जोड़ा करो यार, ये सब ऐसे स्माइलीज मत भेजा करो जी. ऑप्शन डी, वेरी गुड. कीवर्ड हंटिंग है. एक कीवर्ड से आप पूरे आंसर को फाइंड कर सकते हैं. ऑप्शन 2 किसका है? ऑप्शन 2 भी मुझे बता दो. ऑप्शन 2 किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है ये? द राइट आंसर हाउएवर हियर इज ऑप्शन डी, because he spent too much time hunting and too little of time in religious duties.
What narrative perspective does Chaucer employ in opening of the general prologue? जनरल प्रोलोग में क्या वॉइस वो यूज करते हैं? पार्डनर, वेरी गुड, पार्डनर है वो पीछे वाले का राइट आंसर। बताइए। अभी मैंने पीछे बताया था क्लास में, बताया था ना पीछे, वेरी गुड। 5 स्टार्स दे दूं, बहुत बढ़िया। पीछे बताया था ना, जो जनरल प्रोलोग है आपका वो फर्स्ट पर्सन नैरेशन में है। किसमें है? फर्स्ट पर्सन नैरेशन में। आई करके बात कर रहे हैं ना, आपको मैंने लाइंस भी दिखाई थी उनकी, दैट आई एम ऑन, यू नो, आई एम गोइंग टू टेक अप दिस पिलग्रिमेज, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट। सो फर्स्ट पर्सन नैरेशन में आपका जनरल प्रोलोग का नैरेटिव वॉइस है। In Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales, the pilgrims, like the medieval society of which they are a part of, are made up of 3 social groups or estates. What are the 3 estates? Again, UGC previous year question. वो कौन सी estates हैं जो described हैं? ये भी मैंने आपको क्लास में बताया है, इसमें भी 5 स्टार लेंगे आप लोग। बताओ। Nobility, church, commoners, royalty, nobility, peasantry, royalist, republicans, peasants, country, city, commons. जी बताइए। Very good. So I'll give you 5 stars on that. Absolutely correct. It is the nobility, the clergy, and the commoners. Correct answer. The 7 deadly sins are sought to be portrayed in Chaucer's Canterbury Tales. Which of the following sins is not covered? UGC previous year question. 7 deadly sins है हमारे पास। Jealousy, lust, envy, then एक बार आप चलो आंसर करो, मैं बताती हूँ फिर। कौन सा सिन है जो नहीं डिस्क्राइब्ड है इसमें? कॉम्बिनेशन बताना है, मैं भी एक बार देख लूँ उस आंसर को। जी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आई सी अ टग ऑफ वॉर। ऑप्शन सी इज 1 and 4, jealousy and lust, and option 4 is 3 and 4, lust and homicide. The right answer is option C. किलिंग तो हो रही है ना, जो पार्टनर की टेल है, पार्टनर्स टेल, उसमें होमिसाइड ही तो है। वो 3 फ्रेंड्स हैं, 3 रेबलर्स, वो एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये कहीं हमें देखने, ये मतलब देखने को मिलता है। लस्ट हमें नहीं, लस्ट इज व्हेन यू लस्ट आफ्टर समबडी, नो कैरेक्टर लस्ट आफ्टर अनदर कैरेक्टर इन दिस वर्क। सो ये कहीं नहीं देखने को मिला है हमें, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज जेलसी। जेलसी भी जो है, नहीं सॉरी, ओ सॉरी, क्या कहते हैं, एक मिनट नहीं, लस्ट तो हो रहा है, एक मिनट, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। ऑप्शन सी इज 1 and 4, पर होमिसाइड तो हो रहा है इसमें। पार्टनर्स टेल में द रेबलर्स आर किलिंग ईच अदर, लस्ट भी हो रहा है। लस्ट हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है इन द मिलर्स रीव्स टेल, इन दोनों में देखने को मिल रही है। एनवी भी देखने को मिल रही है पार्टनर्स टेल में। फिर अगर एनवी पार्टनर्स टेल का है तो ये कंसिडर नहीं किया जा रहा है। जेलसी तो डेफिनेटली नहीं है, तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। लस्ट, मिलर और रीव में हमें देखने को मिल जाता है इनकी टेल्स में।
एनवी हमें पार्टनर्स की टेल में मिलने देखने को मिल जाती है जब थ्री रेबलर्स एक दूसरे से एनवी करते हैं एंड दैट इज व्हेन दे डिसाइड टू किल ईच अदर. तो होमिसाइड भी, पर होम सॉरी 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 मैं नहीं ठीक है आंसर, ठीक है मैं बताती हूँ. माई बैड, होमिसाइड इज नॉट वन ऑफ द 7 deadly sins also. Homicide is not one of the 7 deadly sins. That is also one fact, no? Envy है partner's tale का. Homicide is not one of the 7 deadly sins. There is wrath, sloth, gluttony. For then there is something for ego. I'm not sure ego के लिए क्या word used है. Pride, sorry, pride. Fourth is pride. Fifth is envy. Sixth is jealousy. Seventh is lust. Sorry, trick question. Sorry, trick question. मैं खुद tricked हो गई. हाँ, 7 deadly sins हैं jealousy, envy, lust, wrath, sloth, gluttony, pride. Homicide is not one of the. It is not one of the deadly sins. ये count ही नहीं करेंगे कायदे से. Also lust is described. Jealousy भी नहीं है कहीं पे, तो jealousy और ये वैसे jealousy और envy सेम ही हुए. jealousy और envy सेम ही हुए वैसे तो. हाँ मतलब बट homicide for sure 7 को मैं कौन सा मिस कर रही हूँ मैं deadly sin. There is sloth and gluttony. There is lust. There is wrath, that is anger. There is pride, envy. हाँ, I don't know which one am I missing. Greed. Oh, thank you. thank you. Greed. Of course, there is greed. ठीक है. Great. So we've come down to the answer. Thank you for helping me, guys. एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं क्वेश्चन को. हमें पूछा इनमें से कौन सी जो 7 deadly sins है वो नहीं डिस्क्राइब्ड है. पहली बात तो ये ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि होमिसाइड इज नॉट वन ऑफ द 7 deadly sins. द 7 deadly sins आर ग्रीड, wrath, sloth, gluttony, lust, pride and envy. सो ये तो ऑटोमेटिकली हो गई ऑप्शन 4. तो या तो ये वाला आंसर बनेगा या फिर ये आंसर बनेगा. अब इसमें से जेलसी कहीं पे भी नहीं है. लस्ट हमें मिलर और रीव में देखने को मिलती है, एनवी हमें पार्टनर में देखने को मिलती है. सो इट इज 1 and 4. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. यस, ग्रेट. चलो, राइट. Sunil, yes, I was in confusion. I'm not in confusion anymore. I'm not God. I can't know everything. Next question. Which of the following is true of the Canterbury Tales? Again, UGC previous year question. इनमें से कौन सी जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स बहुत बनते हैं ना इधर से, मैंने तभी क्लास के बिगनिंग में सारे फैक्ट्स ही कराया आपको. Which of the following is not true of the Canterbury Tales? No, sorry Shweta, we could only complete it I think till letter N or O. उसके बाद का लेकिन P नहीं किया. P से करना है आई थिंक. P Q R S T U V W X Y Z. ये अब अगले सेशन में हो पाएगा बिकॉज अभी वी आर डूइंग दिस 1 month का क्रैश कोर्स. उसके बाद आई विल डू एग्जाम बिफोर एग्जाम, सो टाइम नहीं मिलेगा. जितना भी हो पाया. डबल वैलिडिटी वापस से शुरू करा दें. कोई फेस्टिवल आ रहा है क्या? दशहरे पे आएगी अब डबल वैलिडिटी काजल. ठीक है, डबल वैलिडिटी दशहरे पे आएगी आई थिंक बिकॉज फेस्टिवल्स पे आती है. ऑप्शन 3 is true of the Canterbury Tales. Chaucer the Pilgrim narrates Sir Topper's tale only incorrect. Chaucer the Pilgrim narrates the tale of Melibea only incorrect. ठीक है. Option 3 5 stars. अभी आपको बताया था Sir Topper's tale and tale of Melibea, Chaucer the Pilgrim character बताएंगे. Very good. One of the less noticed and acknowledged distinction of the Canterbury Tales is again UGC previous year question. एक बात है इस वर्क की, एक क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. देखो, वन ऑफ द लेस नोटिस्ड एंड एक्नॉलेज्ड डिस्टिंक्शन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज दैट इंस्टेड ऑफ रिवीलिंग England's division, it revelled in its diversity. It upheld the idea that we cannot divorce poetry from knowledge because poetry itself is an object of knowledge. It alerted us to the term auctor, someone who is both an originator
or one who gives increase, the best description for Chaucer himself. It married domesticity to divinity, the baker's loaf with the bread of life. नहीं नहीं ऐश्वर्या, आप मेरे नाम क्यों ना, तो आप पे गुस्सा नहीं करूंगी मैं, डोंट वरी। जी बताइए। Option 1. Instead of revealing England's division, it reveled in it. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि he was very conscious to he was very conscious of the fact that he wanted to describe each estate and how the things were really going on, in it. But he really did not try to pose one character against the other. He's not trying to pose character from or representative of one social class with the other. And the fact that he uses pilgrimage as the basis of his frame narrative, that also gives us a good idea of the fact that he was very tolerant as an individual. Although he himself belonged to the upper class of the society, he himself was a courtier, a nobleman, yet he reveled in the diversity of England. So absolutely correct. Option 1 is the right answer. मैथ्यू आर्नल्ड्स टचस्टोन्स व, ये तो मैं आपको अब आंसर पता, ये चौसर ही होगा, पर मैं आपको फैक्ट अलग से बता देती हूँ। मैथ्यू स्टोन ने अपनी क्रिटिकल वर्क द स्टडी ऑफ पोइट्री में राइट पोइट्री को जज करने के लिए ये पैरामीटर्स सेट किए थे। वो पैरामीटर्स, वो स्केल्स उन्होंने बोरो किए थे फ्रॉम सम ऑफ द अदर राइटर्स ऑफ द पास्ट हु हैड रिटन सम ग्रेट वर्क्स ऑफ पोइट्री। उनको उन स्टैंडर्ड्स को, उस स्केल को उन्होंने टचस्टोन्स बुलाया है। तो टचस्टोन मेथड से उन्होंने चौसर को जो है एक लो पोएट की तरह रखा था। मतलब चौसर की जो रेपुटेशन है या उनकी जो मेरिट है वो लो डिग्री में रखी थी। व्हाई? बिकॉज ही सेड दैट चौसर लैक्ड हाई ट्रूथ एंड सीरियसनेस इन हिज वर्क। For Matthew Arnold, it was very important that whoever writes poetry, a poet, when he attempts to write a piece of work, it should really be didactic. It should add something back to the society. It should give something to the society. It should help people to create a moral ground for them. Chaucer, however, he is absolutely unconcerned about this. In his works, most of his works are largely descriptive. They do not add to the society. So एसेंशली हाई ट्रूथ नहीं है, हाई सीरियसनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो चौसर को एक लोअर रैंक पे रखेंगे। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मीटर्स, a 5-foot line, was introduced by Chaucer in the 14th century and has since then become the commonest of all meters in English poetry. किसकी बात हो रही है? आइम्बिक, ट्रोकेइक, हेक्सामीटर, पेंटामीटर। बताओ। अभी थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, एक बार इसको आंसर करो। ऑप्शन आज कल तो बहुत सारे गलत आंसर्स दिए थे आप लोगों ने, चलो आज एक जेन्युइन मिस्टेक की है बिकॉज कंफ्यूजन है। देखो, उन्होंने आइम्बिक, पेंटामीटर जो कि राइमिंग है उसका इस्तेमाल किया था, बट आपसे पेपर में ये नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है 5 फुट की लाइन। 5 फुट की लाइन किसको बोलते हैं? तो वो आयम हुई या पेंटामीटर हुई, बताना। ताइबा, योगिता करेक्ट, अर्पिता करेक्ट, वरुण करेक्ट। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने राइट आंसर कैच किया है। क्वेश्चन में ये नहीं है कि पहले स्ट्रेस्ड है पहले अनस्ट्रेस्ड है, वो वाला कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। आपसे पूछा ये गया है कि 5 फुट की लाइन है जो कि काफी फ्लेक्सिबल है, उसको आइडेंटिफाई करो। सो दैट इज पेंटामीटर। नो कर दी सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं, चलो। Last question of the day. She was a worthy woman all her life. Husbands at church door she had 5. In the prologue, Chaucer represents the wife of Bath as crude and vulgar, outspoken and boastfully licentious, a witness to masculine oppression, bubbling with vitality. Find the correct options. क्या-क्या हैं वो? वाइफ ऑफ बाथ को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 1, 2 and 4 आर करेक्ट, 1, 3 and 4 आर करेक्ट, 2, 3 and 4 आर करेक्ट।
इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ. One thing that she was not was a witness to masculine oppression for sure. इसको तो बिल्कुल ही रास्ते से हटा दो. ठीक है. She believed in learning from experience and not from authority. So she was not subjected to masculine oppression. She was not a subject of masculine oppression as such. ऑप्शन 3 तो बिल्कुल हटा दो. ऑप्शन 3 किस ऑप्शन में है? इसमें भी आ रहा है तो ये गलत है, इसमें भी आ रहा है ये गलत है, इसमें आ रहा है ये गलत है. एक ही ऑप्शन है जिसमें ये नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा. कभी कभी पता है क्या, नॉलेज से ज्यादा ना एलिमिनेशन काम आती है. आप लोग पेपर देने जाएंगे, एक बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा. एक तो कल जो मिस्टेक की थी आप लोगों ने आज फिर से की है. पीछे आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा और आप सीधा जंप कर गए. आपको पता है आइम्बिक पेंटामीटर, आइम्बिक देखते ही आपने आंसर पे जंप कर दिया. आई थिंक आपने पूरे ऑप्शंस पढ़े नहीं. तो कल भी आप लोग थोड़ा एक मायोपिक व्यू से जो है आंसर कर रहे थे. आज एक क्वेश्चन आपने मायोपिक व्यू से किया जो गलत था. दूसरी बात, जब कभी आपको लगे कि आंसर नहीं पता, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं हमारे पेपर में, तो आई थिंक हम बड़े ही आराम से एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में शायद कॉम्बिनेशन बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता, लेकिन मैंने एलिमिनेशन यूज करके पहले इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया. जिसमें ऑप्शन 3 था, मुझे एक्सपेक्टेड था कि 2 ऑप्शन एंड में निकलेंगे, मैं फिर देखूंगी, लेकिन लकीली 3 ऑप्शन हैं जिसमें ऑप्शन 3 था, तो मैं राइट आंसर तक डायरेक्टली एलिमिनेशन से ही पहुंच गई. तो ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे अपने एग्जाम में, टाइम भी सेव होगा और बहुत सारे ऐसे स्मार्ट गेसेस आप जो है एक्चुअली यूज कर पाएंगे और उन पे मार्क्स ले पाएंगे जिनकी आपको पूरी नॉलेज भी नहीं होगी. काफी अच्छा तरीका रहेगा ये. ठीक है जी, चलो. सो 64 को आज मैं यही वाइंड अप करती हूँ. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. कल हम अपनी क्लास को आगे लेकर जाएंगे. कल की क्लास में मैं आपको मिडीवल ड्रामा पढ़ाना चाहती हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए मिडीवल ड्रामा. ड्रामा का इंग्लैंड में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है, मिडीवल ड्रामा, ये सब हम पढ़ेंगे. अभी तक हम पोइट्री फोकस ही थे, ड्रामा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज दैट. सुरभि, बट देयर इज मेंशन दैट इज मोस्ट कॉमन. That is most common. क्या? I don't know how you answered, but I'm just telling you a better way of answering. Okay? चलिए, I'll see you guys tomorrow. कल हम मिडिवल ड्रामा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, YouTube पे मेरी संडे को है महामैराथन. YouTube पे हमारे इसी चैनल पे जहाँ पे आप हैं, आप देखेंगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ. सब लोग अभी के अभी सेशन लाइक कर दो और रिमाइंडर अपना सेट कर लो. सो फॉर संडे माय मैराथन इज ऑलरेडी स्केड्यूल्ड फॉर 3 PM सेम टाइम पे. हो गया, 1 सेकेंड. ये रही. सो ये मेरी महामैराथन प्लान है जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ. बढ़िया 2-3 घंटा मजे से करेंगे. सो अभी के अभी जो है सेशन को लाइक कर दो. साथ ही साथ संडे को 3 बजे जुड़ना ना भूलना मेरे साथ. सैटरडे संडे मजे से पढ़ाई करेंगे. अभी टाइम नहीं है छुट्टी लेने का, सब लोग मजे से पढ़ाई करो. मजे मजे में ही सारी पढ़ाई कर लेंगे. ठीक है. इसके साथ मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है बैच में एनरोल करने में, यानी कि डायरेक्टली सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए आप अगर करंट बैच में जुड़ते हैं, इसमें कोई मुझसे पूछ भी रहा था मैम आप क्लास में अपनी बुक से पढ़ाती है? नहीं, क्लास में सेपरेट नोट्स हैं. तो आपको वो नोट्स भी मिलेंगे, प्लस इस मेगा पैक में बुक्स भी मिल जाती हैं, प्लस इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं. सब इसी में मिल जाता है. तो पुरानी सभी क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसी बैच की. करंट लाइव क्लास में आपको जो है एंट्री मिल जाएगी. तो ये एक अच्छा बैच है अगर आप ट्राई कर रहे हैं. आई थिंक डबल वैलिडिटी अभी है नहीं, पर आप अगर एनरोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. शायद आएगी तो शहर पे, आई एम नॉट श्योर. आती है वैसे मोस्टली फेस्टिवल्स पे, पर यह है कि टाइम नहीं बचा है अभी, तो एनरोल करना है कर लीजिए. अगर अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्री बुकिंग अभी से शुरू है जनवरी के बैच में. आप लोग अलग से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, अलग से बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं. उसमें बस कोड याद रखना, उसमें मेरा Y542S लगता है. बैच में एनरोल करते हैं तो कोड Y542 लगेगा. अगर टेस्ट सीरीज और बुक्स लेते हैं सिर्फ तो उसमें SP लगेगा साथ में, ध्यान रखना. ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.